was very sensitive. I could feel the pain that people endured. My father once told me, "It's good that I can feel people's pain. It would be even better if I could transform one's pain into soothing relief." These words of my father nourished and nurtured the divinely planted seed in me to become a compassionate healer. And my journey with Ayurveda, the science of life, began. According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water, and earth. And solution to all chronic ailments lies in balancing these body elements. As the origin of Ayurveda goes back to thousands of years, so some part of our ancient historical knowledge is lost. That's why I started my own research and shared it with the world. Ayurveda can give very quick recovery, even quicker than allopathy, in most chronic ailments. The blend of Ayurvedic medicines, Panchkarma, yoga, diet has helped Dr. Navdeep Sharma create the brand Rishtpusht and Team Nirogam by treating thousands of patients suffering from chronic illness. Join Dr. Navdeep Sharma's guided path of healthy living. Call now at +1 888 624 5925. I was a bit reluctant to start with Ayurveda, but when I met Dr. Navdeep during his visit to the UK, he infused confidence in me and I started treatment from him. So thank you, Dr. Navdeep Sharma, for giving me a kidney disease-free life. You're indeed the best Ayurvedic doctor I've ever come across. I had been experiencing a bit of swelling in my feet. I ignored it initially, but when it started to increase and I started feeling weakness, I met a doctor. He advised me to go for a urine checkup, and I saw protein leaking in the urine report. I was really tense. Then one of my friends suggested me about Dr. Navdeep Sharma from Rishtpusht. She had got a kidney treatment done from him successfully. I was reluctant in the beginning as Ayurveda was a new thing for me. However, when I joined one of the live YouTube sessions of Dr. Navdeep, it infused confidence in me. And the best part was yet to come. I consulted him through a video conferencing and asked for some treatment. And he simply guided me with some exercises and diet changes. And to my astonishment, the protein leakage stopped within 15 days. Dr. Navdeep Sharma, you are the best, and your Ayurveda guidance really works. Dr. Navdeep Sharma from Rishtpusht, you are the best Ayurvedic doctor I have come across. Thanks for giving my uncle a kidney disease-free life. Yes, kidney doctor I've come across. Thank you, Dr. Navdeep Sharma. Your advice really changed my life. And thank you, Rishtpusht. Redefining Ayurvedic excellence. Dr. Navdeep Sharma, a true Ayurvedist and a staunch believer in nature's healing power, treated thousands of patients suffering from chronic ailments. Not only a healer, he is also a contributor and keen researcher. Representing India at the British Parliament. Working in collaboration and sharing ideas with global personalities at the British Parliament. Participation in 4th Fssai International Conference on Ayurveda and Integrative Medicine at Middlesex University. Paper presentation at Middlesex University, London. Interactive TV program at World Ayurveda Congress 2018. Telecasted at famous TV channel Care World. Participation in the first International Ayush Expo at Dubai. Arogya 2017. The first international exhibition and conference on Ayush and wellness. Being felicitated at Ahmedabad for his valuable contribution to promote Ayurveda. Creating new benchmarks.
Participation in Interfix 2018, New York, USA. Participation in the 8th World Ayurveda Congress. Delivering. नमस्कार, हमारे इस इवनिंग लाइव इंटरैक्टिव सेशन में मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। A very warm welcome to all of you in this evening live interactive session of ours where we generally try to discuss quality Ayurveda with you, and while we discuss Ayurveda with you, we also try to take the maximum of your queries, your questions, and we try sorting them out with the help of Ayurveda. Ayurveda, the science of life. As it said, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के विकारों को दूर करना, यही आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद केवल रोगियों के लिए नहीं है, आयुर्वेद हर उस व्यक्ति के लिए है जो तंदुरुस्त भी है और ये चाहता है कि वो तंदुरुस्त ही रहे। सदाम अली जी, आपने बताया कि अब्बास अली जी रिसेंटली उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। स्पूटम बार बार आता है और चक्कर आता है और यूरिन में जलन है उनको। तो मैं चाहूँगा सद्दाम जी, अगर कुछ फर्दर डिटेल्स आपकी तरफ से मुझे मिल जाएं, या जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं, अगर आपके कोऑर्डिनेटर मुझे कंप्लीट डिटेल्स दे पाएँ आपके केस की, तो मैं आपको पूरी जानकारी इस बारे में दूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए और मैं चाहूँगा टीम की जो कोऑर्डिनेटर हैं सद्दाम अली जी के, वो डिटेल्स दें, क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ उनके कोऑर्डिनेटर रजत जी हैं और रजत जी हमारे साथ आज अवेलेबल नहीं है। और मैं चाहूँगा कि ये डिटेल्स उनके बिहाफ के ऊपर या तो सीमा जी आप फॉरवर्ड कीजिए मुझे, मैं देख पाऊँ। मुझे जानना होगा कि अभी सद्दाम अली जी की क्या दवाइयाँ चल रही हैं हमारे एंड से और कब से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है। कुछ डिटेल्स मैं चाहूँगा आप हमारे साथ बने रहिए। जब तक हमारी टीम जो है मुझे डिटेल्स प्रोवाइड करती है तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। आज क्योंकि भारत बंद था तो कुछ कम कोऑर्डिनेटर्स हैं उससे और कुछ कम डॉक्टर्स के साथ हम ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि हमने पूरा प्रयास किया कि मेडिकल सर्विसेज होने के कारण बाधा ना आए, लेकिन जहां जहां पर भी कुछ स्टाफ की कमी से हम लोग जूझे तो वहां कुछ रिस्पॉन्स टाइम हमारा आज कम रहा अपने पेशेंट्स के लिए, उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा। और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अक्सर जब हम शाम को आपके साथ जुड़ते हैं तो किडनी पेशेंट्स की बात हम अक्सर किया करते हैं। किडनी डिजीज़ आज बहुत बढ़ता चला जा रहा है और हर बीतते दिन के साथ हम देखते हैं कि हज़ारों ही किडनी पेशेंट्स नए केसेस हमारे पास आते हैं। कई कारण हो जाते हैं, उसमें कारण कई हो सकते हैं, लेकिन इवेंचुअल रिजल्ट क्या होता है? यूरिन में प्रोटीन का आना, क्रेटिनाइन का बढ़ना, ब्लड यूरिया का बढ़ना, वॉमिटिंग, नोजिया, कई प्रकार के लक्षण, ये कॉमन चीजें भले ही किसी भी अलग कारण से ही क्यों किडनी डिजीज ना हो जाए देखने को मिलती हैं। और पेशेंट जब कभी भी अप्रोच करते हैं उनका सबसे पहला क्वेश्चन, उनकी सबसे पहली उम्मीद ही होती है हमारा क्रेटिनाइन कब कम हो जाएगा। आम तौर पे जब कभी भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं सबसे पहला सवाल ही उनका ये होता है कि सर क्रेटिनाइन कब से घटना शुरू हो जाएगा, ब्लड यूरिया कब कंट्रोल आ जाएगा, डायलिसिस तो नहीं कराने पड़ेंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी प्रॉपर ट्रीटमेंट एक पेशेंट हमारे से करवाता है और गाइडलाइंस का भी जब वो फॉलो करता है तो मेजॉरिटी पेशेंट्स के केस में जो डिज़ायरेबल रिकवरी है वो मिल जाती है। क्रेटिनाइन यूरिया ऑटोमेटिकली जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और पेशेंट डायलिसिस से बच जाता है। बहुत से पेशेंट्स तो हमारे पास तब आते हैं जब ऑलरेडी वो लोग कहीं ना कहीं से डायलिसिस शुरू कर चुके होते हैं। क्योंकि वो डायलिसिस शुरू कर चुके होते हैं तो उनका एक मकसद रहता है उस डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी को घटाना। क्योंकि जो लोग डायलिसिस करवा रहे हैं या डायलिसिस करवाना शुरू कर चुके हैं वो बखूबी जानते हैं कि कितनी तंग करने वाली प्रक्रिया है ये डायलिसिस। अगर एक बार या दो बार होना हो तो व्यक्ति भले ही तंगी के साथ सही लेकिन डायलिसिस करवा भी लेगा। लेकिन जहां बात आ जाती है हर हफ्ते 2 डायलिसिस की, हर हफ्ते 3 डायलिसिस की, इंसान जिंदगी में कुछ और करने के काबिल ही नहीं रह जाता है। एक डायलिसिस करवाता है, अगले दिन तक स्टेबल,
उससे अगले दिन तक काम करने के काबिल और उससे अगले दिन फिर डायलिसिस। तो जिंदगी बदल जाती है एक व्यक्ति की। उस रोग युक्त जिंदगी से निकला जा सकता है सही आयुर्वेद का इस्तेमाल करके। जब हम सही आयुर्वेद की बात करते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस रियल आयुर्वेदा अबाउट विच वी आर टॉकिंग राइट नाउ। मैं सबसे पहले अब्बास अली जी के केस में चाहूंगा, 11 सितंबर को अब्बास जी आपने दवाइयां हमसे मंगवाई, जिसमें रिनल केयर टैबलेट्स, PTM5, गोक्षुरादि गुगलू और नेफ्रोसेप, ये मेडिकेशन जो है वो आप ले रहे हैं सुबह और शाम। ये डिटेल्स मेरे पास जो है वो आपके फादर की भेजी गई है। और 1 वीक हुआ दवाइयाँ शुरू की और आपने बताया स्पूटम बार बार आता है। जब वो कम नहीं हुआ है और उनको आपके पास से मेडिसिन यूज़ करे, जब से ज़रा चक्कर रही है और स्टमक में जलन से पड़ रही है। तो मैं यहाँ चाहूँगा, एक तो इनकी दवाइयों के साथ आप एंडीजाइम सिरप सद्दाम जी आप जरूर स्टार्ट कर लीजिए। ये आपको लेना है 20 ml दिन में 3 से 4 बार। दूसरा, आपको कोशिश करनी है ये एंडीजाइम सिरप जो आप देख पा रहे हैं मेरी साइड पे, इसे लीजिए। दूसरा, मैं चाहूँगा एक बार इनकी जो डाइट चल रही है वो आप मुझे लिख भेजिए। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं लाइव के दौरान ही कि इस हफ्ते इन्होंने क्या क्या खाया। मैं बता दूंगा कि खाने में कोई खराबी तो नहीं चल रही है। बीपी कैसा रह रहा है ये भी लिख दीजिए। और एक फटकरी के गार्गल्स, पोटैश एलम के गार्गल्स इनके लिए बहुत अच्छे हैं, तो फटकरी के गरारे इनको जरूर करवाएं। So we are talking about kidney disease, and when we talk about kidney disease, the very common feature in most of the kidney patients who approach us is an increase in the serum creatinine, the blood urea level, which the patient really wants to control, and the patient wants that the level should be controlled without the help of dialysis. Here what I would like to tell you is that when we talk about our concept of kidney treatment, our concept of kidney treatment is based on two major motives. The first one is the management and the second one is the treatment. Now when anyone is approaching Ayurveda, he or she very well knows that the management can even be done in allopathy. Even in allopathy, if a patient is going and is suffering from raised creatinine level, raised urea level, the best kind of management is asking the patient to go for a dialysis. And the patient starts with dialysis, and the creatinine, the urea is temporarily managed for 2 days, 3 days, 4 days, after which it again rises and the patient has to go for another dialysis. And like this, a patient who once starts dialysis has to go for a dialysis twice or thrice a week. In most of the cases, it is the same case. So when we talk about Ayurveda, both the motives, that is the prime motive, which is the management part, that the creatinine level, the urea level should automatically be controlled so that the patient does not have to go for a dialysis. Now that part is also controlled with the help of Ayurveda. And the other part, which is the treatment part, that is repairing the damaged nephrons, is also kept in mind, because if we only focus towards controlling the creatinine level, the urea level, then that is only half the treatment done, because it's just not important to keep that in check. Another thing which is very important is to check the underlying reason, the reason which caused that kidneys getting damaged, and repairing the nephrons so that gradually the patient does not have to take even our medications. Raj Lakshmi ji, you have written that your creatinine is 9 and urea is 250. How to control? Raj Lakshmi ji, you can see the number on your screen which is there. I would like to have the complete blood reports like KFT, which is kidney function test, because I would also like to have a look at the potassium level, the phosphorus, the sodium, the chloride, any level that you have gone for. I would like you to forward that level over here so that I can then analyze the complete details and I can reply you back in a proper way. So while my live is going on, please try sharing all your reports through WhatsApp on the number which is there on your screen, and my team shall immediately be forwarding me the reports and we shall be getting back to you with the details in this regard. Be rest assured that the creatinine level, the urea level which you are talking about currently is controllable. It can be controlled, because patients, when they come to us, most of the patients, they are having a creatinine of somewhere around 12.5, 13. Definitely the blood urea level, which is 250, is on the upper side. I would have liked the blood urea level to be
around 180, 190, 200 with a blood urea of around 250. Your patient might already be having signs of uremia like vomiting, nausea, breathlessness coming his or her way. But since we deal such cases regularly, so don't worry. All that I require from your end is a complete report sharing with me. Saddam Ali ji, you have shared that your BP is 130 by 80 and the BP is 130 by 80 of your father, and the blood sugar is around 160 fasting. Diet is non-vegetarian diet and नहीं दे रहे कुछ भी नॉनवेज में, आप नहीं दे रहे नॉनवेज में चपाती एंड जो डाइटिशियन ने जो बताया था वही दे रहे हैं. मिर्च जो है आपने बताया है कि नमक पिंक सॉल्ट यही 1 ग्राम दे रहे हैं. सदाम जी बाकी चीजें आप ठीक कर रहे हैं. स्टिल मैं चाहूंगा एक बार डाइट जो है उनकी वो आगे हम कंप्लीट आपने क्या दिया है वो भी जान पाए एग्जैक्ट. अगर चीज़ों का नाम हमारे पास आ जाए तो वो और बढ़िया है, ताकि मैं और बेहतर तरीके से गाइडलाइंस दे सकूं. हमारे को प्लीज शेयर कीजिएगा. बाकी फटकरी के गार्गिल्स और एंडीजाइम सिरप ये 2 चीज़ें भी आप साथ में जरूर शेयर शुरू कीजिए. उनकी लाभ उनको देखने को इससे मिलेगा. So we were talking about the management part and the treatment part of the kidneys, where I just guided you that one of our motive is the management, where we need to control the creatinine level, the urea level, the sodium, the phosphorus, the potassium and other electrolytes with the help of the Ayurvedic supplements that we are using for the patient. So that is achieved with the help of the medications which are having a proven effect on decreasing the levels of these unwanted things in the blood by the uricosuric effects, the effects with which the medications the herbs are throwing out the toxins from the body. So that is one part. And in the management part only, if we see that the creatinine level, the urea level, it has gone really high and it has become troublesome and risky for the patient to be at his or her home, we always advise our patients to be admitted at our center so that the patient can then expect a quicker recovery coming his or her way. And on the other hand, the major thing which I just talked about, the treatment part. Now management is just one of the things which needs to be done. The second part is treatment. And when we talk about treatment of a patient suffering from a renal disease, renal failure, over there we require the patient to be given those herbs, those supplements which are nephron reparative in action. Many of the herbs which we use, like Bohevia diffusa, like Berberis aristata, like Tribulus terrestris. Now these are some of the botanical names which I just shared with you. Many of these herbs are proven to be nephron reparative in action. When these herbs are taken slowly and gradually, those nephrons which had stopped working but otherwise they were not medically dead, they were only physiologically not working, those nephrons they again start reworking, and the patient, along with the temporary recovery that is provided to the patient with the help of Ayurvedic treatment that we are giving, starts moving towards a more permanent kind of recovery which is coming the way of the patient with the help of the Ayurveda that we are using. सद्दाम जी आपने लिखा है कि यूरिन और स्टमक में जलन है सर, और कुछ हद तक यूरिन आउटपुट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है. सद्दाम जी अब बिल्कुल आश्वस्त रहिए. देखिए 1 वीक के अराउंड हुआ है उनको मेडिकेशन लेते हुए, और इस 1 वीक के अंदर जैसा कि आप बता रहे हैं कि उनके केस में यूरिन आउटपुट भी कुछ बढ़ा है. स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखेंगे कि उनका यूरिन आउटपुट बढ़ने के साथ साथ उनके पैरामीटर्स भी जो इम्प्रूव ज़रूर होंगे. तो विश्वास के साथ जैसा कि आप अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप ट्रीटमेंट कैरी ऑन कीजिए, बिल्कुल भी चिंता आप मत लगाएं. शीला देवी जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके पेशेंट आईडी का, और आपने बताया कि आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं 2 मंथ से, और क्रेटिनाइन जो है वो पहले से रिड्यूस हो गया है. बहुत अच्छा लगा जी जानकर, और आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद. देखिए आयुर्वेद की हम बात करते हैं अक्सर आपके साथ, और जब आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद आहार, विहार और औषध
इन तीनों का नाम आयुर्वेद है। आयुर्वेद में आपको आहार भी चाहिए सही, अर्थात डाइट, कि हम लेने क्या जा रहे हैं। विहार, दैट इज द लाइफस्टाइल, द लाइफस्टाइल अगेन इज रिक्वायर्ड टू बी द बेस्ट। एंड औषध, that is the medication. Medication again should be one of the best medicines that are used. Once we are using Ayurveda in the true sense of Ayurveda, it will definitely give you recovery. A recovery beyond expectations, because even in the most dreadful diseases, when Ayurveda is used in the true essence, in the true spirit of Ayurveda, the recovery is very quicker. It is even quicker than the allopathic medications, because otherwise it is said that Ayurveda is slow to act. But if proper Ayurveda is taken, Ayurveda is never ever slow to act. So मैं ये उम्मीद लगाता हूं कि सही प्रकार का आयुर्वेद आपकी जिंदगी में उजाला जरूर लाए। आपको किसी भी प्रकार का सहयोग हमारी टीम की तरफ से चाहिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम, हमारे माहिर डॉक्टर्स की टीम मोर देन विलिंग रहेगी आपको सही जानकारी देने के लिए। आप सब आयुर्वेद के सफर पर हमारे साथ जुड़े, उसके लिए मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आप हमारे वीडियोस को यूं ही लाइक और शेयर करते रहिए। जो सपोर्ट आपके एंड से हमें मिलती है वो हम आज भी एक्सपेक्ट करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। When I was younger, I was very sensitive. I could feel the pain that people endured. My father once told me, it's good that I can feel people's pain. It would be even better if I could transform one's pain into soothing relief. These words of my father nourished and nurtured the divinely planted seed in me to become a compassionate healer. And my journey with Ayurveda, the science of life, began. According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water and earth, and solution to all chronic ailments lies in balancing these body elements. As the origin of Ayurveda goes back to thousands of years, so some part of our ancient historical knowledge is lost. That's why I started my own research and shared it with the world. Ayurveda can give very quick recovery, even quicker than allopathy, in most chronic ailments. The blend of Ayurvedic medicines, Panchkarma, yoga, diet has helped Dr. Navdeep Sharma create the brand Rishtpusht and Team Nirogam by treating thousands of patients suffering from chronic illness. Join Dr. Navdeep Sharma's guided path of healthy living. Call now at +1 888 624 5925. Redefining Ayurvedic excellence. Dr. Navdeep Sharma, a true Ayurvedist and a staunch believer in nature's healing power, treated thousands of patients suffering from chronic ailments. Not only a healer, he is also a contributor and keen researcher. Representing India at the British Parliament. Working in collaboration and sharing ideas with global personalities at the British Parliament. Participation in 4th Fssai International Conference on Ayurveda and Integrative Medicine at Middlesex University. Paper presentation at Middlesex University, London. Interactive TV program at World Ayurveda Congress 2018. Telecasted at famous TV channel Care World. Participation in the first International Ayush Expo at Dubai. Arogya 2017. The first international exhibition and conference on Ayush and wellness. Being felicitated at Ahmedabad for his valuable contribution to promote Ayurveda. Creating new benchmarks. Participation in Interfix 2018, New York, USA.
Participation in the 8th World Ayurveda Congress. Delivering a thought-provoking talk on depression at a conclave in Expo, California. Felicitated during Indo-American Wellness Conclave and Exhibition. Dr. Navdeep Sharma and Dr. Monica Sharma invited by Juice Punjabi, New York, at their head office. Association with Ministry of Ayush, Government of India. Honoring Padma Shri, Shri Hans Rajhans, Member Parliament. With Yoga Guru, Baba Ramdev, Patanjali Ayurveda. Felicitation by Dr. Anup Jain and sharing valuable thoughts at a Dhanwantri Jayanti Samaro, New Delhi. Speaker panelist on Ayurveda and Wellness Industry at Ayurveda Expo. Felicitation by Dr. Rajesh Kumar Singh at Ayurveda Expo. Visit of renowned politician Dr. Ratamjit Singh Basra at Rishtpusht, Amritsar Centre. Visit of esteemed ex-Health Minister Lakshmi Kanta Chawla at Rishtpusht, Amritsar Centre. Dr. Rakesh Sharma, Director Ayurveda, Government of Punjab, at Rishtpusht Mohali Centre. Dr. Navdeep Sharma with Sri Sudhanshuji Maharaj, a global spiritual leader, motivational guru and the founder of Vishwa Jagriti Mission. On air on CNN News 18. Giving COVID solutions to Indian community through Tez News. On air on Aaj Tak Tez. The most sought-after panelist and educator on prominent international channels. Regular daily telecast of interactive show on international TV channel Juice Punjabi. Regular daily telecast of interactive show on national TV channel Disha TV. Invited to represent Indian Ayurveda against allopathy. On India Ahead channel. Dr. Navdeep Sharma, live, in Northeast on famous national TV channel on Times 24. Newspaper accolades. Indian-Tibetan Therapeutic Exchange Camp 2008, regularly organizing camps with Indian Army, Ayurvedic Camp. Holding regular philanthropic free health checkup campaigns. Regular Ayurvedic shivers. Regular guest speaker for DGCA. Organization of yogic camps in various parts of the country. YND Karnaragam Private Limited. We provide research-based treatment in all sorts of chronic ailments. My promise to patients. My beliefs. Academic credentials. Our media associates. Certificates of qualifications. Welcome to ND Karnaragam Panchkarma Center. Another indoor wing of naturopathy and Panchkarma. Now operational under the able guidance of Dr. Navdeep Sharma.
dedicated team. Karnaragam Group of companies. Number of patients treated. The only company to cover all verticals on a global scale. Our products. Compliance to all government regulations. Our national presence. Our global presence. Modern style interactive and very popular mobile apps. Support through YouTube Live. Dr. Navdeep Sharma, and it changed my life. I met Dr. Navdeep Sharma, and he has changed my life. Thank you very much, Dr. Sharma, and thank you, everyone. Thank you, Dr. Navdeep Sharma, for giving me a kidney disease-free life. You are indeed the best Ayurvedic doctor I've ever come across. I want to take this opportunity to thank Dr. Sharma for giving Robert a disease-free life. And thank you very much. Thank you, Dr. Navdeep Sharma. Thanks for giving my uncle a kidney disease-free life. Follow us at. Contact us.